Hello everyone, how are you all? I hope you are all good students. So in this video, we will be discussing the important current affairs of 29th of January. Students, here we will be talking about World Health Organization. They have declared Georgia as the 45th malaria free country. Next thing we will be talking about to boost the banking system in India, right? 1.5 lakh crore rupees will be injected by RBI. Then iSpirit, they have launched PSLAI. This is an launch to strengthen the MSME financing to provide them better money, right? What will be the guidelines here? We will be discussing it. Then HSBC India, they have launched this credit card for frequent travelers. Then we will be talking about Yes Bank, and RBI has penalized certain banks, right, because of the regulatory non-compliance. All these things will be discussed in detail, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. We upload the weekly current affairs, monthly current affairs, and topic wise regularly to help you learn the content better. Also, if you are new to our channel, students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's talk about national affairs students first. Overview of the Indonesian President Prabowo Subianto's visit to India from January 23rd to 26th of 2025. Right? Important question from this becomes here is who was the chief guest of the 76th Republic Day parade? Right? So on the 76th Republic Day this year, Indonesian President Prabowo Subianto was the chief guest. Correct? Take a note of this. Where is this or Republic Day celebration held? It is held at the Kartavya Path. Where is Kartavya Path? It is in New Delhi. Correct? Take a note of this. Apart from this, as he was on a visit here almost for 3 to 4 days, during his visit, multiple MOUs has been signed here. Here, we will further help, or we will together work, India and Indonesia will together work on enhancing the trade between them, right? Use of currencies between them. Here, the main focus will be how can we enhance manufacturing, as both in Indonesia and India, we see cheap labors, right? Apart from this, here, food and agriculture will be talked about, right? That how we can enhance the food security between the nations of our country, between the two nations. Also energy, technology, as we can see now, AI is the hot topic of today's generation, right? So it is one of the also theme here under which the work will be done. Then here you can see the third India Indonesia Chief Executives Forum, CEOs Forum was held, right? This was a third edition of it, so remember this. And it was held in New Delhi. It was on the sidelines of the Indonesian's president's visit to India. This forum was co-chaired by Ajay Sriram of India and Anindya Novan Bakiri of Indonesia. Next is Ministry of Finance. They have they have notified the unified pension scheme for central government employees to be effective from 1st of April 2025. See, it is your UPS. Another term is your OPS. UPS is your unified pension scheme. This is the pension scheme that was recently launched by the central government for their employees. Old pension scheme is the pension scheme that the government or central government employees receive that were prior to 2003. Correct? Before them,
who were appointed as the government officials, they were following this old pension scheme, and after that it is no pension scheme was there. It was your NPS, national pension scheme. Right now a UPS has been released, that is unified pension scheme, that will also is guaranteeing a fixed amount of income after the completion of the job tenure. Before that some amount of money will be deducted. The only difference between these two types of pension scheme is in pension scheme the amount of money that used to be deducted was also given to you at the time of retirement along with the pension, that 50% of pension. In UPS that 50% of pension will be there with you, but the amount of money that you will be depositing will not be credited to you or will not be given to you at the end of your pension, or at the start of your pension or at the end of your tenure. Right, so as per the Ministry of Finance, PFRDA will monitor the UPS regulations and this scheme will come into effect from 1st of April 2025. And one more thing, remember this UPS pension is voluntary for the existing employees. Then they can opt for NPS or they can opt for this UPS. Next, 55th annual meeting of World Economic Forum was held in Switzerland from January 20 to 24th. Now, this which edition of this? It was the 55th edition of this annual meeting. What is the location? Where was this held? It was held in World Economic Forum, that was held in Switzerland, and it was from 20 to 24th of January that this was held. Then this meeting was based on what? It was on the collaboration for the intelligent age. This was the theme here of the meeting of the 55th annual meeting held in Switzerland. Also in this 30 new industrial clusters from Australia, Brazil, Colombia, India, from India 5, the Netherlands, Saudi Arabia, Sweden and Thailand and UK have joined the World Economic Forum's Transitioning Industrial Cluster Initiative, bringing a total of 33 across 6 countries and 5 continents. From India, how many industrial clusters have joined here? 5. Then if we talk about World Economic Forum, who is the president here of World Economic Forum? Borch Brande. He is of Norway. Where is the headquarter? The headquarter is in Cologne, Switzerland, and it was founded in 1971. Right, then during this World Economic Forum 2025, 7 countries from Africa, that is Angola, Bangladesh, Gabon, Guatemala, Kenya, Senegal and Tanzania have joined the Global Plastic Action Framework, bringing a total to 25 countries. Take a note of this also, right? Very important. So what we have discussed so far, we have discussed about the 55th annual meeting of World Economic Forum held in Davos, Switzerland from 20 to 24th of January. We have discussed the theme here. Then we have discussed about the 13 new industrial clusters. From India there were 5. Then we have discussed about countries that have joined the Global Plastic Action Partnership here, right? Then apart from this, Indian origin South African filmmaker Anand Singh has been appointed as the Global Arts and Culture Council at the GACC's annual meeting held in World Economic Forum. Apart from this, we will be discussing about this Crystal Award winners. Here the 31st edition of the annual Crystal Award was announced at the World Economic Forum. This Crystal Award was presented to Hilde Schwab, the chairwoman and co-founder of the World Economic Forum's World Arts Forum. Right? Take a note of this. Then remember this Crystal Award is given to the cultural leaders who have made contribution in promoting the social and environmental and creative progress towards worldwide, or basically work towards the social issues, correct, promoting social culture of a particular place, correct. Then one more thing, remember here, our country India has slipped to the 3rd place in the Edelman Trust Barometer 2025 ranking, and it is China that has secured the top position, correct. Then here if we talk about this index, is about the trust of the general population, trust of the general population in the government, businesses, medias or NGO. So our country India has slipped to the 3rd position and China is on the 1st position here, correct. And who is on the 2nd position? It is Indonesia. Then next, with 7 new members to GPAP expands to 25 countries. We just saw about this, that these 7 countries has joined it. Next is World Health Organization has declared Georgia as the 45th malaria-free country. So direct question from this is the headline, its question itself, that which country has been declared as the 45th malaria-free country by World Health Organization? It is Georgia, right. And also it will become the first in the WHO European region to attain this status. Next is banking and finance. RBI has announced a series of steps to inject 1.5 lakh crore rupees into the banking system.
See students, as of now, if we talk about the situation of our economy, the amount of loans, personal loans, credit card loans, right, they have increased. More and more people are defaulting on these loans, right? The interest rate is high, people are taking less loans, right? And now here the banks, even the consumption of the Indian market is slowly slowing down. That means the disposable income with people is somewhere less. Correct. So recently RBI has announced they have decided to inject 1.5 lakh crore rupees into the banking system so that it will become easy for them to manage their expenses and perform the spending in various projects, infrastructure projects, and also to give the loans further to the people when required. Correct. Take a note of this. Here, the RBL will purchase the government securities through the open market operations worth 60,000 crore rupees in three tranches of 20,000 each. Here, this open market operation auctions will be held from 30th to 13th of Feb and 20th of Feb 2025. Here, the RBI has further announced a 56-day variable repo rate auction for the notifiable amount of 50,000 crore rupees, which is scheduled to be held on 7th of Feb. Now, what is this VRR, variable repo rate, right? This is a means to basically when the government or when the RBI wants to infuse money into the short term for money or basically for short term liquidity into the banking system, through which RBI allows the banks to borrow at a rate that is determined by the lower repo rate for a maximum of 14 days. Here it will be for 54 days. OMO, that is your open market operation, it is a quantitative tool of RBI's monetary policy which is used to maintain liquidity into the banking system, and it involves buying, selling of G securities, that is your government securities, from to the public and as well as banks. Correct. Take a note of this. Moving on, iSpirit, they have launched the PSLI to strengthen the MSME financing. So our country wants to grow MSMEs. Reason being that the products, the services that these MSMEs will be delivering or making, we can export them into the international market, right? And with this, you will be seeing that if we want to export, the quality should be of good, or it should be of good quality or top-notch quality, right? So for all this process to happen, the financing in the MSME sector is required, right? For the same reason here, iSpirit has launched this PSLA to strengthen the MSME financing. If we talk about this iSpirit, it is your India Software Product Industry Roundtable, right? This is a think tank for the India's software industry, and they have launched this PSLAI. This is your Priority Sector Lenders Association of India that was formed under the Section 8 of the Companies Act of 1972. Right here, this PSLI, it aims to streamline and enhance the availability of the loans under the priority sector lending norms to the NBFCs or from the banks to these companies, to these MSMEs. Right, take a note of this. Apart from this PSLAI, it will be a non-profit organization that will focus on promoting the loans for the sectors where these MSMEs can grow. The founding members here include the institutions such as your Ugrow Capital Limited, India Infoline Finance Limited, and fintech companies such as your Get Vantage Private Limited, Get Growth Capital Private Limited. Next is HSBC India. They have launched HSBC Travel One credit card for frequent travelers. So if you are a traveler, right, and if you want to take benefit of the credit card, various point systems, various cashbacks, various benefits that comes with those credit card, HSBC India, they have launched this HSBC Travel One credit card. Right here, the new joining fee will be of 4,999 rupees, and the annual fee here will be also 4,999 rupees, and if you spend more than 8 lakh rupees here, then your annual fee will be removed. Right. Also, the new user who spent 10,000 rupees within the first 30 days will receive a 1,000 rupees cashback. Next is Yes Bank. They have launched a frictionless finance accelerator program in partnership with Reserve Bank Innovation Hub and SPJIMR, that is your SP Jain Institute of Management and Search, that is in Mumbai, Maharashtra. So it is Yes Bank based in Mumbai, Maharashtra in partnership with RBIH of Bengaluru, Karnataka, and SP Jain Institute. They have launched this accelerator program, that is frictionless finance accelerator program. It was launched on 16th of January, that is your National Startup Day. Right now, this finance accelerator program, as the name suggests, this will focus on the fintech startups. It will help them to grow, it will help them to scale their innovations, it will help them with financing, it will help them
with the required talent that they are required to grow. Next is RBI. They have penalized Jammu and Kashmir Bank, Bank of India, and Canara Bank for regulatory non-compliance. Remember the amount with Jammu and Kashmir Bank, it is 3.31 crore rupees. For Bank of India, 1 crore rupees penalty. For Canara Bank, it is 1.63 crore rupees penalty. Next is BIMTech. They have launched a blockchain-based digital currency, BIMcoin. Right, BIMcoin name, take a note of this. This is a blockchain based digital currency launched by BIMTech, that is Birla Institute of Management Technology in Greater Noida, UP. Correct, and it is a blockchain based digital currency for their ecosystem that will be used. Following this, IIT Madras of Chennai, Tamil Nadu, right, here BIMTech, they became the first management institute in India to launch this cryptocurrency, right, from India. Right, Next is awards and recognition. 3 Indian women make it to Forbes 50 over 50 global list, with Quarisha Abdul Karim ranking the first here, right? So we are talking about the Forbes 50 over 50 list. Who secured the top position here? You can see Quraisha Abdul Karim. She secured the first position here, right? And this is list release basically celebrating the achievements of inspiring women from 32 countries and territories across Asia, Europe, Middle East, Africa, South Africa, Central America, and South America. Correct? Take a note of this here. You can see here Quraisha Abdul Karim, expert in infectious disease epidemiology and one of the top researchers on HIV and AIDS, is ranked first, whereas Rafaela Aponte Daimat, the co-founder of the Mediterranean shipping company based in Geneva, Switzerland, secured second position. Right, you can see the first, second, third, fourth, fifth women here, right? Next is related to sports. Australian Open 2025 was held, and Jannik Sinner and Madison Keys has won the men and women singles respectively here. Right, Jannik Sinner is from where? He is from Italy, and Madison Keys is from United States of America. This Australian Open, this was held in Melbourne, Australia. This was 113th edition of Australian Open and the 57th in the Open era. Correct, it was held where? From 12th to 26th of January. The total prize money for the tournament was $96.5 million. Here you remember Prithvi Shekhar of India won the men's single title by defeating the France Oliver Grave at the Australian Open Deaf Championship that was held in Melbourne. Right, and this is his second consecutive title win after 2024. Right, so men's single Jannik Sinner of Italy, women's single Madison Keys of USA. Next is Indian Grandmaster Inian Paneerselvam won the 9th Johor International Chess title. I repeat, Grandmaster Inian Paneerselvam has won the 9th edition of the Johor International Open Chess Tournament that was organized by the Johor Chess Association, and it was held in Malaysia. Correct, take a note of this. Next is important days. World Leprosy Day observed on 26th of January, and this day is observed basically to create awareness about this disease leprosy, right? The stigma that is associated with it, right? How it is affected, what are the things that need to be taken care of, and how the life of the patient is impacted because of this. This year it was the 72nd edition of this day that was observed. Theme here being Unite, Act, Eliminate. Right, and here you can see purple ribbon. This is the symbol here for World Leprosy Day. First time the World Leprosy Day was observed in 1954. So that's all for the day, students. Okay, no, wait. International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust observed on 27th of January, and this day is basically observed to honor all the victims of the Holocaust, also known as the Shoah. Right, there is a theme here that I want you all to remember: Holocaust Remembrance for the Dignity and Human Rights. For the first time, this day was observed in the year 2006, that is 27th of January 2006. Next is Samman Sanjeevani. This is an application launched in Haryana on National Girl Child Day. When is your National Girl Child Day? It is observed on 24th of January, and on that day an application that is Samman Sanjeevani was launched. Right, it was launched where? It was launched in Haryana. Right, this application will basically ensure the delivery of the services by collecting beneficiary data and updating the monthly benefits. Correct, and this application, Sanjeevani application or Samman Sanjeevani, has been launched for the Mahila Evam Kishori Samman Yojana in Chandigarh, Haryana. Right, under this here the BPL families will be benefited, right? Or you can say sanitary napkins,
right? They will be distributed to the women and girls that are aged between 10 to 45 below the poverty line families, right? And these benefits are provided through the Anganwadi centers and the school areas. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Next, students, is our homework section. Tell me recently first astronomical observatory of Eastern India will be inaugurated where? This is your first question. Second question, tell me recently who inaugurated the All India Presiding Officers Conference that was held in Patna, Bihar. Name the person who inaugurated it. Third question, tell me recently what is the rank of India in coffee production? Coffee production, and who secured the top position, right? Next thing, tell me recently which edition of the fourth question, which edition of the Jaipur Literature Festival was held, when it was held, and which edition of it was held. And the fifth question that I want to ask you is recently FICCI, they have projected that India will be growing by how much percent in FY25. So these are your homework questions, students, right? Do comment below, and if you find the session interesting, students, do hit the like button and do comment below and let us know what do you feel about it. That's all for the day, students. Thank you and have a nice day. Name that vessel, that is your pollution control vessel. The name of that vessel is Samudra Pratap, right? Take a note of this. Correct. This is also known as pollution control vessel. This Samudra Pratap, what this will do is this will control the oil spilling. It will control the oil spilling that is taking place across the Indian coastline, right? So in order to protect the oil spilling across the Indian coastline, Samudra Pratap has been developed by for the Indian Coast Guard, and it was developed by Goa Shipyard Limited. Next, name the project that was recently launched by the Indian Army to provide support and services to the defense pensioners, veterans and their families. What is the name of that project? The project is Naman, right? Project Naman. This project Naman will focus on the implementation of various systems for pension administration Rakshak. That is your SPARSH. What is SPARSH? System for Pension Administration Rakshak. This is a digital pension system that will streamline all the processes that are related to pension. Next, which organization has recently signed an airframer contract with Safal Helicopters Engines Private Limited to develop and supply a helicopter engine by the name Aravali? So, name of the helicopter engine, Aravali. So, which organization has signed this airframer contract with Safal Helicopters Limited? It is your Hindustan Aeronautics Limited, that is HAL. And this engine, it has been named after the Aravali mountain ranges. Next, name the bilateral naval exercise between India and France that was held in Mediterranean Sea from 2nd to 4th of September 2024. So what is the name of that bilateral exercise? The exercise is Exercise Varuna, right? Then this Exercise Varuna, it is the 22nd edition of this exercise held between India and France. Take a note of this, right? And in this, from Indian side, INS Tabar took part in this exercise. Next, name the aerospace company that has recently achieved the successful maiden flight of the India's first indigenous unmanned bomber aircraft, that is FWD-200B. So what is the name of that company? That is Flying Wedge Defense and Aerospace. This aircraft is classified as a medium altitude long endurance, that is MALE unmanned aerial vehicle, and it has a wingspan of 5 meters and a length of 3.5 meters. It can fly at a cruising speed of 152 km per hour with a maximum speed of almost 250 km per hour. Next is in September, India successfully launched Agni-4 missile from the integrated test range in Chandipur, Odisha. That is Agni-4. It belongs to which type of missile? So this Agni-4, this is a intercontinental ballistic missile, and it was India that has successfully tested this Agni-4 missile from the ITR in Chandipur, Odisha.
This Agni 4, this is a surface to surface ballistic missile that has a range of 4,000 kilometers. Next, which shipbuilding company has recently launched two indigenously designed and constructed anti-submarine warfare shallow watercraft named the INS Malpe and INS Mulki? So, which is that shipbuilding company? It is Cochin Shipyard Limited that has developed this fourth and fifth of the 8 anti-submarine warfare shallow watercraft project. Fourth is INS Malpe and the fifth is INS Mulki. Next, name the military exercise between India and USA that has recently commenced at the Foreign Training Node in Rajasthan. What is the name of that exercise? The exercise is Yudh Abhyas, right? And it will run till 22nd of September 2024. This is the 19th edition of this Yudh Abhyas exercise held in Alaska, USA, right? I repeat, this the 19th edition. I repeat, one more thing, correction here. The 19th edition of Yudh Abhyas was held in Alaska, USA, but this time this is the 20th edition of this exercise that we are talking about, that was held where? In Rajasthan. Next, which defense company has recently signed a contract worth 26,000 crore rupees with the Ministry of Defense for the procurement of 240 AL-31 FP aero engines for Sukhoi 30 Mark 1 aircraft of the Indian Air Force? So, which is the defense company? It is Hindustan Aeronautics Limited. Next, name the country where Indian Navy's P-8I aircraft recently reached to participate in the 16th edition of exercise Kakandu. So, what is the country where Indian Navy's aircraft reached? It is Australia, right? Then in this exercise, more than 3,000 personals over 32 nations took part. Next is name the missile that the Indian Navy and DRDO successfully tested in flight from the launchpad of the ITR in Chandipur off the coast of Odisha. What is the name of that missile? That is VLSRSCM, that is Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile. Next is name the joint exercise that was recently conducted between Indian Air Force and Royal Oman Air Force in Oman. What is the name of that exercise? The exercise is Eastern Bridge. And this bilateral exercise began on 11th of September and it will end on 22nd of September. Also remember the 5th edition of Al-Naja exercise held between Indian Army and Royal Army of Oman. Right? So air exercise is Eastern Bridge and the exercise between the armies is Al-Naja. Next, Ministry of Defense, they approved the Indian Navy's 2,500 crore rupees plan to develop what? It was to develop the extra large unmanned underwater vessel. The vessels are expected to strengthen India's defense against enemy submarines and surface vessels. Next, which city has recently hosted the Indian Defense Aviation Expo, that is IDAX 2024? So it is Jodhpur, Rajasthan, where Jodhpur, Rajasthan, that is Jodhpur is the city where it hosted the Indian Defense Aviation Expo 2024. Also, Tarang Shakti exercise was concluded here. Tarang Shakti is one of the largest India's first multinational air exercise hosted by our Indian Air Force. Next, name the state-of-the-art Kalvari submarine escape training facility that was recently commissioned by the Indian Navy at INS Satwana in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So, recently, what is the name of that facility? It is Vinitra. Next is students, science and technology. Which company has recently launched Sentinel-2C satellite aboard last Vega rocket for environmental monitoring? The name of the company is Ariana Space. This satellite, it will serve as the Earth observation satellite for the European Union, which will provide important data for the environmental, correct, or we can say important data for the environment monitoring. Next, name the India's first space station which will be launched by 2028 by ISRO. So India's space station, it is Bharatiya Antariksh Space Station, and the entire setup will have 5 modules. First module will be launched in 2028 and it is expected by 2035 India will have our own space station. Hello everyone, how are you all? I hope you are all good students. So in this video, we will be discussing the important current affairs of 29th of January
Students, here we will be talking about World Health Organization. They have declared Georgia as the 45th malaria-free country. Next thing we will be talking about to boost the banking system in India, right? 1.5 lakh crore rupees will be injected by RBI. Then iSpirit, they have launched PSLAI. This is an launch to strengthen the MSME financing to provide them better money, right? What will be the guidelines here? We will be discussing it. Then HSBC India, they have launched this credit card for frequent travelers. Then we will be talking about Yes Bank, and RBI has penalized certain banks, right, because of the regulatory non-compliance. All these things will be discussed in detail, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. We upload the weekly current affairs, monthly current affairs, and topic wise regularly to help you learn the content better. Also, if you are new to our channel, students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली 76th रिपब्लिक डे इंडिया के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, राइट। इसकी जो परेड होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है कर्तव्य पाथ, वो होती है कर्तव्य पाथ पर, जो कि न्यू दिल्ली में है, राइट। इस परेड के दौरान चीफ गेस्ट कौन थे? वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। कौन है? वो है प्रभावो सुबियांतो, राइट। ये 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट थे, मार्क करके चलेंगे। इसी के दौरान अभी इंडिया एंड इंडोनेशिया के द्वारा कई सारे MOUs भी यहाँ पे साइन किए गए हैं, ताकि और कौन कौन से सेक्टर में? एजुकेशन, एनर्जी सेक्टर, राइट, डिफेंस कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर साइनिंग, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी तीसरा इंडोनेशिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फोरम भी था, जहाँ पे अलग अलग कंपनीज के CEOs आते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि वो अपने सेक्टर को कैसे ग्रो करेंगे। ठीक है, कैपिटल क्या रहेगी इंडोनेशिया की? जकार्ता। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी नोटिफाई किया अबाउट यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। UPS का ऑप्शन है दूसरा, NPS। आप इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोई सी भी चूज़ कर सकता है। एक चीज़ याद रखेंगे, एक और होती है ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें और UPS में डिफरेंस क्या है? बाकी सारी चीज़ सेम है, बस दोनों में जो पैसा कटता है, OPS में वो पैसा आपको एंड में मिल जाता है अलॉन्ग विद द पेंशन। UPS में वो पैसा आपको कुछ हद तक नहीं मिलता, लेकिन पेंशन आपको मिलती है। UPS और NPS में डिफरेंस क्या है? NPS में जो आपका पैसा होगा उसमें से 40% तक का या 60% तक का पैसा आप ले सकते हैं। रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी आपका एज अ पेंशन बन जाएगा, जैसे आपका SWP होता है स्टॉक्स में, राइट। और ये पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अभी ये 1 अप्रैल 2025 से आपका पेंशन स्कीम UPS लागू हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। इवन अभी पे कमीशन लाने की बात की जा रही है। कौन सा पे कमीशन? 8वां पे कमीशन, जो कि कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो इट विल बी अ गेम चेंजर। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। नेक्स्ट, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, PFRDA ये ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करेगी UPS रेगुलेशंस को, एंड ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और होती है, देखो, एक होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या है कि आप खुद से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, आप VRS ले सकते हो। और पहले आपका जो रिटायरमेंट टाइम है एट द एज ऑफ 60, आप उससे पहले रिटायर हो सकते हो। अगर आपने 30 साल कुछ अपनी एज पूरी कर लिया है तो आपको पूरी पेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट 55th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुई थी, कहाँ पे? डेवोस स्विट्जरलैंड में हुई थी, 20 से लेके 24 जनवरी के बीच हुई थी। अगर हम इस मीटिंग की बात करें, यहाँ पे कई सारे डिसीजंस हुए हैं, कई सारी चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी थीम देख लेते हैं, किस थीम पर ये आपका 56th मीट थी। ये थीम क्या थी? कोलैबोरेशन ऑफ द इंटेलिजेंट एज, ये आपकी थीम रहेगी, मार्क करके चलेंगे। राइट, कैसे हम इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर सकते हैं एआई की मदद से, इस पर बहुत फोकस किया जाएगा। आप देख रहे हैं एआई टॉक ऑफ द टाउन है, एंड हर इंडस्ट्री में ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे रेवोल्यूशन लाने वाला है। बहुत स्पीड से यहाँ पर हमें ग्रोथ होती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट, इसके अलावा याद रखेंगे 13 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया है। कौन कौन सी कंट्री से? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडिया से 5 ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया। देन नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, थाईलैंड एंड यूके। फिर 7 कंट्रीज़ यहाँ पे बेसिकली जीपीएपी का पार्ट बनी, जो कि है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। राइट, कि प्लास्टिक को कैसे हम, देखो प्लास्टिक एक नेसेसरी एविल है, राइट, इसके बिना काम नहीं चल सकता और इसके साथ हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है कि हम इसको ट्रीट करना सीख लें। अब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी बनाए जा रहे हैं जो कि आपके प्लास्टिक को ये डिग्रेड कर देते हैं, राइट। तो ये भी एक नेसेसरी एविल की तरह आप मान के चलेंगे, तो उनका यहाँ पर ये 7 कंट्रीज पार्ट बन गई है। फिर बात करेंगे क्रिस्टल अवार्ड्स की। क्रिस्टल अवार्ड बेसिकली अभी प्रेजेंट किया गया हिल्डा स्वाब को, जो कि चेयरवीमैन है एंड को फाउंडर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वर्ल्ड आर्ट्स फोरम की। टेक अ नोट ऑफ दिस, 31st एनुअल ये क्रिस्टल अवार्ड्स थे जो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए। एंड ये अवार्ड दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जो कि प्रमोट करते हैं सोशल, इन्वायरमेंटल एंड क्रिएटिव प्रोग्रेस वर्ल्ड वाइड। फिर इसी के अलावा इंडिया 3rd पोजीशन पे स्लिप कर गया इन द एल्डरमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 की रैंकिंग में। ये आपका बेसिकली जो पॉपुलेशन है उनका अपने गवर्नमेंट में, बिजनेसेस में, मीडियाज में, एनजीओज में कितना ट्रस्ट है वो बताता है। यहाँ पे चाइना 1st पोजीशन पे है एंड 2nd पोजीशन पे आ जाता है इंडोनेशिया, ठीक है, एंड 3rd पोजीशन पे हमारा इंडिया है। इसके बाद बात करेंगे 7 न्यू कंट्रीज हमने देखा जीपीएपी का पार्ट बनी। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जॉर्जिया को एज द 45th मलेरिया फ्री कंट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। इसके बाद बात करें आरबीआई, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं। आरबीआई ने अभी सीरीज ऑफ स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं ताकि 1.5 लाख करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा सके बैंकिंग सिस्टम में। देखो अभी हो क्या रहा है, जो लोन है ना वो बहुत सारा लोगों ने ले लिया है, पर्सनल लोन, क्रेडिट ले लिया है, राइट। एंड इससे क्या हो रहा है, बैंक्स ने इस लोन को दे दिया लेकिन बहुत सारे लोग डिफॉल्ट होते हुए दिख रहे हैं, बिजनेसेस हॉल्ट होते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस कह रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर यहाँ से ये खर्चा नहीं करेंगे तो इनको ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी एंड इनको सस्टेन करने के लिए बिजनेसेस को सरकार को लोन देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेसेस ही फर्दर यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनको सैलरी देते हैं, करेक्ट। तो लोन एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, राइट। तो अभी यहाँ पे आरबीआई ने कई सारा स्टेप लिया ताकि 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्ट किया जा सके, ताकि अब बैंक्स जो है वो अपना ऑपरेशंस का या जो भी खर्चा, जो भी बुक्स में जो खर्चा होता है उनको सस्टेन करने के लिए उनके पास लिक्विडिटी हो सके, राइट। 2 तरीके से किया जाएगा। एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन, 60,000 करोड़ के रहेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे आरबीआई परचेज करेगी, ऑफ 3 ट्रांचेस परचेज करेंगी 20,000 रुपीज़ ईच की। इसी के अलावा ये आरबीआई यहाँ पे 56 दिन का वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन रखेगी वर्थ 50,000 करोड़ रुपीज़। देखो वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है, यहाँ पर बैंक्स को ना वीआरआर के अंडर जो लोन मिलता है आरबीआई से वो सस्ते रेट पे मिल जाता है एज टू योर रेपो रेट। मान लो अगर बैंक अभी 4%, आरबीआई 4% पे दे रहा है तो आरबीआई कहेगा कि अच्छा चलो आ जाओ 3.5% पे ले लो। तो इससे क्या हो जाएगा, बैंक्स को कम रेट पर ज़्यादा लोन मिल जाता है एंड वो फर्दर लोन्स उसको हाई इंटरेस्ट रेट पर देकर फर्दर उनसे वो गैप से पैसा अर्न कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप मान लो होम लोन लेने जाते हो, राइट, होम लोन लेने पे आपको इजीली 8.5 से लेके 9.5 10% तक चला जाता है। और अगर आप एनबीएफसी हो, एनबीएफसी तो 11 से लेके 15% तक का आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है अगर आप होम लोन लेते हो, राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, जहाँ वो 4%, 5%, 6% पे बैंक पैसा उठा रहे हैं इन्वेस्टर्स से या अलग ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ पर इनको फर्दर इतने दे के ये बैलेंस से पैसा अर्न करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आई स्पिरिट। इन्होंने लॉन्च किया PSLAI टू स्ट्रेंथन द MSME फाइनेंसिंग। देखो आई स्पिरिट क्या है, ये है आपका
इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल्स, राइट, आई स्पिरिट, यह भी एक थिंक टैंक है, राइट, इंडियन के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, एंड इनके द्वारा PSLAI लॉन्च किया गया। ये क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये फॉर्म किया गया था अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 1972, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे इसका मेन एम क्या रहेगा कि बेसिकली जो MSMEs है, राइट, उनको प्रायोरिटी सेक्टर पे यहाँ पे लैंडिंग दी जाए। रीज़न बीइंग, क्यों हम MMSCs को इतना प्रायोरिटी सेक्टर में रख रहे हैं? रीज़न बीइंग कि हम इंडिया का जो मेन एम है ना, वो है कि हम MSMEs को ग्रो कर सकें। इससे क्या होगा कि ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाएंगी, सर्विसेज देंगी या प्रोडक्ट्स बनाएंगी। इस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम एक्सटर्नल मार्केट में या फिर हम बोलें इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे हम पैसा अर्न कर सकें, राइट। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उतना हम मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। बस चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि क्वालिटी पे फोकस करना है अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में खेलना है, राइट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे बहुत इंडिया चाहती है कि बाहर से पैसा बहुत आए और हम इन चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। इसलिए MSMEs को यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर में रख के उनकी फाइनेंसिंग, उनको जैसे भी पैसे की ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराने का काम करेगा। ये जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इस ग्रुप के PSLAI के, वो है यूग्रो कैपिटल लिमिटेड, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड एंड वेरियस फिनटेक कंपनी जैसे गेट वेंटेज प्राइवेट लिमिटेड, गेट ग्रोथ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं HSBC इंडिया। इन्होंने अभी ट्रैवलर्स के लिए HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं। इसका 4,999 रुपीज़ ये आपकी ज्वाइनिंग फीस रहेगी एंड 4,999 ही आपका एनुअल फीस रहेगी। अगर आप 8 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे एनुअल में खर्च कर देते हो तो ये जो आपकी ज्वाइनिंग फीस, ये आपकी जो एनुअल फीस है ये कैंसिल होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट येस बैंक की बात करते हैं। इन्होंने एक फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है RBIH एंड SPJMIR से, राइट। RBI हब है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एंड ये दूसरा है SPJN इंस्टीट्यूट। इन दोनों के साथ मिलकर येस बैंक ने यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 16 जनवरी को लॉन्च किया, जो कि नेशनल स्टार्टअप डे था, राइट। यहाँ पे सेम चीज़ कि हम कैसे इनोवेशन पे ध्यान दे सकें, कैसे इनोवेशन को ग्रो कर सकें, नई टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकें एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें, लिक्विडिटी लोगों तक पहुँचा सकें, बिजनेसेस तक पहुँचा सकें ताकि सेक्टर्स ग्रो करें। फिर बात करते हैं RBI ने अभी कुछ बैंक्स को पिनलाइज करा है, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक फॉर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। इसकी अमाउंट ज़रूर याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने 3.31 करोड़ रुपीज़, बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपीज़, कैनरा बैंक ने 1.63 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इन पे पेनल्टी लगी। फिर आ जाते हैं बिमटेक। इन्होंने लॉन्च की है क्रिप्टो करेंसी, जो कि है बिम कॉइन। ये इनकी ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी है। देखो जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, ये क्या कह देते हैं कि सिक्योर है, राइट। ये एक इकोसिस्टम बना देती है, राइट। ये ट्रांजैक्शन में बहुत हेल्पफुल रहती है, राइट। एंड इसी के साथ साथ कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट। ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फ्रॉड। तो इसको ध्यान में रखते हुए बिमटेक, राइट, जो कि है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा UP, इनके द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देन आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। हम बात करेंगे फोर्ब्स 50/50, 50 साल से ऊपर जो महिला बिजनेसेस बेटर रन कर रही हैं उसकी ये लिस्ट है, जिसमें 3 इंडियन वीमेंस आई हैं। पहली हैं जो और जिन्होंने टॉप किया इनमें से वो है क्वेरिशा अब्दुल करीम, राइट। आप इनको देख सकते हैं, क्वेरिशा अब्दुल करीम। ये एक्सपर्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ में एंड ये टॉप रिसर्चर्स हैं HIV एड्स पर। इनकी रैंक यहाँ पे फर्स्ट रही। वेयर एज राफेल अपॉन्टे डायमंड, ये को ओनर है मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी की फ्रॉम जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये सेकंड पोजीशन पर आई, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं एंड ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? साउथ अफ्रीका से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करेंगे। यहाँ पे जेनिक सिनर, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पर विनर रहे मेंस कैटेगरी में। मेडिसन कीज, जो कि USA से बिलोंग करती हैं, ये यहाँ पे वीमेंस कैटेगरी में विनर रही, राइट। डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूँ तो ये 113th एडिशन था ऑस्ट्रेलियन ओपन का। कहाँ पर हुआ था? मेलबॉर्न पार्क में हुआ था, जो कि कहाँ पर है? मेलबॉर्न में। मेलबॉर्न कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, राइट। यहाँ पे जो विनिंग अमाउंट था वो था $96.5 मिलियन का। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन ग्रैंड मास्टर इनियन पनीर सेल्वम, राइट। ये 9th विनर रहे ऑफ द 9th जौहर इंटरनेशनल चेस टाइटल के। ये कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में हुआ था, करेक्ट। एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। 22 साल के हैं ये,
मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पल रिबन इसका यहाँ पे सिंबल है, आप देख सकते हैं। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली लेप्रोसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। जो लोग इससे पीड़ित हैं उनकी लाइफस्टाइल, राइट, उनकी क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, राइट, उनको सहानुभूति देने के लिए, राइट, उनको मोटिवेट करने के लिए, एंड कि ये ट्रीट किया जा सकते हैं, राइट, एंड उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 72nd ऑब्जर्वेंस इसका हमने इस बार ऑब्जर्व किया। इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट, राइट, एंड ये 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, राइट। इन इंडिया ये डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इसको हम बोल सकते हैं नेशनल लेप्रोसी डे, राइट, तो 30 जनवरी को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ हॉलोकॉस्ट, 27 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे की अगर हम बात करें, राइट, हॉलोकॉस्ट, राइट, या फिर हम बोले शाहो, उनको ऑनर करने के लिए, उनकी मेमोरीज को ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम याद रखेंगे, हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। पहली बार 2006 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद बात करते हैं सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन की, जो कि हरियाणा में लॉन्च की गई। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दौरान इसको लॉन्च किया गया, जो कि था 24 जनवरी। एंड ये एप्लीकेशन रहेगी महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंडर। इस स्कीम की अगर हम बात करें, ये क्या स्कीम है, इसके अंडर यहाँ पे गर्ल्स को सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 10 से 45 साल की वीमेंस को, जो कि BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है, करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू द डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन, एंड ये स्पर्श के ऊपर काम करेगा। स्पर्श क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षक, एंड इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी है HDFC बैंक के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट सफल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि अरावली नाम का एक हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप किया जा सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, एयर कॉन्ट्रैक्ट जो ये है आपका एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो कि मेडिटेरियन सी में हुई 2 से 4 सितंबर के बीच में। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वरुणा, राइट, एंड ये 22वीं एडिशन रहेगी इस एक्सरसाइज की, मार्क करेंगे। 2 से लेकर 4 सितंबर तक हुई। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली, एंड इंडिया से INS ताबर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अचीव किया सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट FWD-200B। अनमैन्ड है और डायरेक्टली आप नीचे से ऑपरेट कर सकते हैं रिमोटली इसको। FWD-200B ये आपका बॉम्बर का नाम रहेगा। पूछा जा रहा है किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा अचीव किया गया इसका फ्लाइंग टेस्ट, सक्सेसफुल फ्लाइंग टेस्ट, तो यह है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अग्नि 4 मिसाइल को फ्रॉम ITR इन चांदीपुर ओडिशा। जो ये अग्नि 4 है, ये किस टाइप की मिसाइल है, तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल है। 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये रहने वाली है। नेक्स्ट, किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने अभी 2 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को डेवलप किया, 4th एंड 5th। 8 ऐसे रहेंगे जिसमें से 4th एंड 5th ये रहेंगे। 4th है INS मालपे एंड 5th है INS मुल्की। ठीक है, पूछा जा रहा है किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडिया एंड USA के बीच में कंडक्ट कराई गई एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान। राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा, युद्ध अभ्यास, राइट, एंड युद्ध अभ्यास का ये है 20वां एडिशन। अगर मैं बात करूं 19वें एडिशन की, तो 19वां एडिशन हमें देखने को मिला था अलास्का में। अलास्का कहां पर है, USA में। नेक्स्ट, किस डिफेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 26,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि 240 AL-31FP एरो इंजन को प्रोक्योर किया जा सके सुकोई 30 Mark 1 एयरक्राफ्ट के लिए ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो किस डिफेंस कंपनी ने ये साइन किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री वेयर इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट ये अभी रीच पहुंचा वहां पर, ताकि 16वें एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काकांडू में पार्टिसिपेट किया जा सके। तो एक्सरसाइज काकांडू ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। 3000 से भी ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हमें पर्सनल देखने को मिल रहे हैं 32 नेशन से, जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट,
उस मिसाइल का नाम बताओ ऑफ द इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ जिन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो उस मिसाइल का क्या नाम है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की गई। देखो, अगर एयरफोर्स की बात की जा रही है तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ईस्टर्न ब्रिज, राइट। यहीं पे अगर मैं बात करूं आर्मी की, इंडियन आर्मी एंड रॉयल ओमान आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई उसका नाम है अल नजा। एंड ये अल नजा का याद रखेंगे, 5th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया इंडियन नेवी का 25,000 करोड़ रुपए का प्लान टू डेवलप व्हाट। तो इन्होंने प्लान अप्रूव किया टू डेवलप एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल को। नेक्स्ट, किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को? तो जोधपुर राजस्थान में ये आपका इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज कराया गया, और सिटी कौन सी है? जोधपुर। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी अभी इस्टेब्लिश की गई थी, कमीशन की गई थी आईएनएस सातवाहना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उस फैसिलिटी का नाम बताओ, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो वो है विनित्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के डिफेंस क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी रिसेंटली किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सेंटिनल 2C सैटेलाइट यूजिंग लास्ट वेगा रॉकेट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ये एरियाना स्पेस के द्वारा लॉन्च की गई थी। एंड ये सैटेलाइट आपका बेसिकली यूरोपियन यूनियन का जो एनवायरमेंट है उसको स्टडी करने का काम करेगी, उससे क्रूशियल डाटा एनवायरमेंट से रिलेटेड ये लाएगी। नेक्स्ट, नेम इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च करने की बात की गई, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, तो उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2035 तक बनके ये रेडी हो जाएगी और इसके 5 मॉड्यूल्स यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो इंडिया के पास भी अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया प्लान टू सेटअप इंडिया का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को? तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया। एंड इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टेलेशन के अंदर 40 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा आने वाले 5 से 6 सालों में। नेक्स्ट, उस स्पेस एक्स के क्रू मिशन का नाम बताओ जो कि पहला वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक ये मिशन था। जेरेड आइसेकमैन जो कि एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है, उनके द्वारा इसको सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन का नाम क्या है स्पेस एक्स के? पोलारिस डॉन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक था ये। ठीक है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया चैमरन 1 रिसर्च सैटेलाइट को इनटू ऑर्बिट बाय क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर? तो ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ये चैमरन 1 रिसर्च सैटेलाइट को, जो कि क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर की मदद से ये लॉन्च किया गया। तो दोनों पूछे जाएं क्वेम 100 या फिर चैमरन 1, तो ये ईरान के रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी फ्रॉम यूएसए बेस्ड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो पहला ह्यूमन मेड मीटियोर शावर है ये अकर हो सकता है फ्रॉम रॉकेट डेब्रिस लेफ्ट ओवर फ्रॉम नासाज विच मिशन? तो नासा के कौन से मिशन से? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट से उनका जो ये मिशन था, राइट, GART डार्ट मिशन, DART, राइट। इस मिशन से जो वो टकराया था एस्ट्रॉयड पर, उससे जो लेफ्ट ओवर्स हैं, राइट, वो यहाँ पे एज अ फर्स्ट ह्यूमन मेड मीटियोर शावर की तरह लैंड कर सकते हैं। एंड इट विल बी अ क्वाइट अ व्यू टू सी। ठीक। नेक्स्ट है, किस एरोस्पेस कंपनी ने भी लॉन्च किया प्रोजेक्ट 200, एक इनोवेटिव सैटेलाइट डिजाइन टू ऑपरेट एट एन अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट? तो किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो वो है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस रॉकेट का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा फ्रॉम अ सी प्लेटफॉर्म ऑन द वाटर्स नियर द सिटी ऑफ हियांग टू प्लेस 8 सैटेलाइट्स इनटू प्लैंड ऑर्बिट? तो क्या नाम रहेगा उसका? जिएलोंग 3। Then students, if we look at some one-liners, recently Sujkai is basically developed by whom? This is an AI powered assistant, right? It was launched for Thailand tourism, right? Then who launched this? So Wipro has launched this Sujkai. Take a note of this. Then recently बीमा सखी योजना was launched for whom? It was launched for women, right? Launched by Prime Minister Narendra Modi. Then next thing, there was a प्रशासन गांव की ओर, that is
प्रशासन गांव की ओर. This was a scheme launched for what? So प्रशासन गांव की ओर. This scheme was launched basically to improve the service delivery. It was launched for improving the service delivery, correct, in rural areas. That is प्रशासन गांव की ओर. Then apart from this, recently remember first India Maritime Heritage Conclave 2024. It concluded where? It concluded in New Delhi. Then who inaugurated the 10th edition of World Ayurveda Congress 2024? It was inaugurated by the Chief Minister Pushkar Singh Dhami. And where was it held? It was held in Dehradun. Correct. Apart from this, recently, which person became the first person to achieve $400 billion net worth, right? This is the net worth of an individual. He is Elon Musk, and he became the richest person in the history. Apart from this, if I ask you which country has recently attained, so I have given the answer. It is India has attained $1 trillion in FDI, right? Your homework is to tell me which country or from which country the highest FDI India has received. Tell me. This is your homework, correct? Then apart from this, if I ask you who has been appointed as the Speaker of the 6th Jharkhand Legislative Assembly, so Rabindra Mahato. Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Trans Union Civil. So Bhavesh Jain has been appointed as the Managing Director and CEO of Trans Union Civil. Then apart from this, recently which INS was delivered or which INS was commissioned when Rajnath Singh was on a visit to Russia? So name of that INS is INS Tushil, right? This was commissioned by India in the Indian Navy. Then who won the ACC Under 19 Men's Asia Cup title? This was held in Dubai, the final, and who won it? It was won by Bangladesh, right? Question can be also asked that who retained this title? So Bangladesh retained it as Bangladesh won it for the second consecutive time. So last year also it was Bangladesh who won this title. Then who became the youngest world chess champion? So D. Gukesh. He became the world's youngest chess champion, right? Then apart from this, tell me, when do we observe International Anti-Corruption Day? International Anti-Corruption Day. So when do we observe this day? It is observed on 9th of December. One more thing, students, if I ask you, recently, in order to develop Amravati in Andhra Pradesh, which organization has given a loan worth $200 million to Andhra Pradesh, that is for the development of Amravati in Andhra Pradesh? So this is Asian Development Bank. Tell me, recently, Ministry of Defense have recently signed a contract worth 136 crore rupees. It is for the procurement of an aircraft, and 12 such aircrafts will be procured. Which are these aircraft? These are Sukhoi 30 Mark 1 aircraft. 12 of these Sukhoi 30 Mark 1 aircrafts will be procured, right? And this contract has been given to which organization? It was given to Hindustan Aeronautics Limited. So Hindustan Aeronautics Limited will be delivering these 12 Sukhoi 30 Mark 1 fighter jets. These are worth 136 crore rupees, and Ministry of Defense gave Hindustan Aeronautics Limited the contracts for the same. Correct. One more question. Recently, we are talking about Abu Dhabi Grand Prix. Abu Dhabi Grand Prix.
Who won this Abu Dhabi Grand Prix? It was won by Lando Norris. It was won by Lando Norris. Right? Lando Norris, he drives for which company? He drives for McLaren. He drives for McLaren. Take a note of this. Right? So Abu Dhabi Grand Prix won by Lando Norris, and Lando Norris drives for McLaren. Correct? Then tell me, students, Women's World Cup, right, will be held recently. Correct? It will be held, or 20, it will be held when? It will be held in 2027. It will be held where? It will be held in Brazil. It will be held in Brazil. And one more thing related to Brazil, that Brazil is having the chairmanship of BRICS recently. Right? Who held the chairmanship of BRICS earlier? It was with Russia. Right? This year it was with Russia. And in Russia too, it was held where? In Russia, it was held in Kazan. And recently in Kazan, there was a drone attack. This drone attack was done by Ukraine. Right? And it was similar to that of 9/11 that took place in USA. Correct? So remember these things. Correct? Women's World Cup in Brazil. Brazil having the chairmanship of Russia BRICS this time. Russia handed it over to Brazil. Right? And in Russia, the BRICS summit was held at Kazan. And in Kazan recently, there was a drone attack. Correct? So these are some important revision current affairs, students. Now let's move to our main content. Next, students, is our homework section. Tell me, recently, first astronomical observatory of Eastern India will be inaugurated where? This is your first question. Second question, tell me, recently, who inaugurated the All India Presiding Officers Conference that was held in Patna, Bihar? Name the person who inaugurated it. Third question, tell me, recently, what is the rank of India in coffee production? Coffee production, and who secured the top position? Right? Next thing, tell me, recently, which edition of the, fourth question, which edition of the Jaipur Literature Festival was held, when it was held, and which edition of it was held? And the fifth question that I want to ask you is, recently, FICCI, they have projected that India will be growing by how much percent in FY25? So these are your homework questions, students. Right? Do comment below, and if you find the session interesting, students, do hit the like button and do comment below and let us know what do you feel about it. That's all for the day, students. Thank you and have a nice day.